अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम मोहम्मद कवी इस्लाम है। मेरी पहली वीडियो है ये, और यूट्यूब पे मैंने डिसाइड किया एक चैनल बनाने का जिसमें मैं रिएक्ट करूँगा, और रिएक्शन के साथ साथ लोगों के ओपिनियन जो है ना वो मैं लूँगा। जाके लोगों के पास, पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात, तो सब मिक्सअप आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और ये मेरा चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये डेवलप हो। आपकी हेल्प चाहिए होगी सबकी, तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। लेट्स स्टार्ट। हम आज रिएक्ट करते हैं एक वीडियो पे जो कि अपनी तरफ से मैंने सजेस्ट की है ख़ुद ही। आइए देखते हैं कि दुनिया में एक हिस्सा है भारत, तो भारत में क्या चल रहा है। और मैं खुश नहीं हूँ इस बात पे, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इंसानियत का अगर नुकसान होगा तो चाहे वो कोई भी इंसान हो, हमें इस्लाम भी यही सिखाता है कि इंसानियत का कोई भी पहलू नुकसान कहीं किसी का हो रहा है तो उस पर खुशी नहीं मना सकते हम, अफसोस होगा। और मुहर्रम भी चल रहा है तो यहाँ पे खुश होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन वीडियो। और हमारी वीडियो जो है मैक्स प्लस है चैनल, उससे मैंने ली है वीडियो, और उम्मीद है कि कॉपीराइट जो है पहली वीडियो पे नहीं आएगा उनकी तरफ से। और आप भी कंप्रोमाइज़ कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं मैक्स प्लस वाले। तो चलें स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 लेट्स गो। Hello there and welcome to Max Plus. India has never seen such a situation in the history of the world. Recently, floods have taken a terrible form in India, the dilapidated state of northern India. नारेबाजी चल रही है यार, रास्ते टूट रहे हैं। Several coastal areas of India have been washed away due to continuous rains for several days. Within the region, Himachal Pradesh in India has faced the most damage. Not only Himachal Pradesh, but also Himachal Pradesh, Delhi, Punjab, and Haryana are facing dire situations due to this flood. काम क्या करो भाई, खले के फिर रोड टूट रहा है, इनका अपना रास्ता बंद होगा। खुश हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन डिजास्टरस मोमेंट। The Indian government has even issued a red alert for the region. Good. Around 200 people have died due to landslides and floods. Several people were injured and sick, and more than 500 houses have been destroyed in this terrible flood. Viene trascinato dall'acqua. Non è più per nessuno. Aiuto, aiuto, aiuto. Guarda, se la sta portando presto. ये इंडिया तो नहीं लग रहा, ये मुझे सुनामी Roads की are मेरे ख्याल में closed लग and रही cars है। are floating in front of eyes one after another. The public life there has faced a terrible disaster. Even looking at the pages of history, on September 6, 1978, the water level of the Yamuna was 207.49 meters. It was the highest ever since Yamuna water level measurements started and data was collected. However, at 11 p.m. on Wednesday, the water level of the Yamuna reached 208.08 meters. फ्लो चेक करो, पानी का फ्लो। गया, घर गया, घर गया, फाउंडेशन गई, घर गया। ओ अल्लाह, पुल जाएगी।
गई गई गई। पूरी पुल। At 7 a.m. on Thursday, the water level had increased to 208.41 meters. This is the highest water limit, breaking the 45-year record. 45-year Old Delhi record, is one of the so most flood-prone Studio. areas of Delhi. बहुत पानी है, बहुत पानी। 12 teams of the National Disaster Response Force are working to evacuate people from flood-hit areas of the city. On the other hand, Himachal Pradesh received an average of 92 mm of rain in a day, which was the first time in 50 years. ये अंडरपास नहीं, पहले ही नाला है। In all, 12 bridges have collapsed in Himachal, 65 roads have collapsed, and 1654 water projects or dams have become inoperable in India. Electricity has been disconnected in several areas. Due to this flood, the communication system has been closed due to mountain mudslides in some places. The vehicle has been stopped. Even the electricity poles on the roads have been uprooted, leaving thousands of people without रोड भरे पड़े हैं electricity. पानी से। To deal with such a situation and to keep everyone safe, the permanent government of Himachal Pradesh has issued a red alert. The people of Himachal Pradesh could not even imagine the damage caused by this flood. The local government thought the flood would come and go again, but no one knew that this flood would wreak such havoc. If they had known in advance, they would have kept their valuables in custody. ये भी पुल गया, टूटा पड़ा। बहुत ज़्यादा नुकसान, So बहुत far, ज़्यादा the नुकसान damage हो in गया। Himachal Pradesh has stood at Rs 4,000 to 5,000 crore. Even Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence has been inundated by floodwaters. Yes, केजरीवाल साहब friends, बहुत the मशहूर हैं surprising thing और is that flooding is a natural disaster. I don't know who the Chief Minister is or who the Prime Minister is. When disaster strikes, it puts everyone in बिल्कुल danger. बिल्कुल। बहुत अच्छी बात ये है, जब आफात आती हैं तो वो नहीं देखती पीएम है, मिनिस्टर है, कौन है, सब एक For जगह this पे। reason, the Chief Minister of India has called an emergency meeting. Earlier, he said that the Delhi government is ready to deal with all kinds of disasters during the monsoon season. The पहले Delhi ये ready police थे, has imposed restrictions against लेकिन हाल public देखना gatherings in flood-hit areas as a precautionary measure. Looking at all the states of India, it is clear that the worst situation is in Himachal Pradesh. There have been flash floods in the Manali, Kulu, Chamba, and Kinore rivers. ला ला ला। Massive landslides have occurred in the mountains, and raging rivers have destroyed one dam after another. Many rivers, including Shatru, Bipasha, and Chandrabhaga, are flowing above the danger line. Many cars were washed away in the water in Manali, Kulu, and Kaisal. Many shops वहाँ पे were आग also लगी है मेरे washed ख्याल। away by the river. The house collapsed. 6 people died in Himachal as a result of the collapse. Even tourist spots like Kathua and Samba in Jammu and Kashmir have been alerted. Landslides occurred in different places. Hundreds of tourists are trapped in this, and the tourist authority is giving them security all the time. ये वीडियो थी हमारी सर। इसके अंदर ये है कि हुकूमत जो सीएम थे उन्होंने केजरीवाल साहब बहुत ही इंडिया के अंदर बड़े माने जाने और बहुत ही जो है ना एक्टिव किस्म के इंसान वहाँ पे समझे जाते हैं और उनकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऐसी जो
काविशें हैं, कोशिशें हैं, उसकी वजह से बड़ी डेवलपमेंट आई है उनके स्कूल सिस्टम में, डॉक सिस्टम, और बहुत सारे उन्होंने जो है ना सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि आवाम के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं, केजरीवाल साहब। तो उन्हीं के इलाके में उन्होंने कहा था कि ये इलाका हमारा अब सेफ़ है, अब हम रेडी हैं मानसून को फेस करने के लिए। लेकिन देखें, हमें कंटिजेंसी रखनी चाहिए। अगर आपको आइडिया है कि 100% मतलब इजाफा होगा बारिश में, पिछली दफ़ा 60 मिलीलीटर हुआ है तो इस दफ़ा 60,000 अगर हो जाए तब भी कोई फ़र्क ना पड़े, इस तरह के सिस्टम हमें करने पड़ेंगे। तो इंडिया, पाकिस्तान ये सब रेडी होते हैं। पता नहीं क्या होता है कि जब भी कोई बारिशें बढ़ जाएं तो हम रेडी थे लेकिन ये हो गया वो हो गया। तो हमें ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान में भी कम है वो है डैम बनेंगे। पानी जो एक्स्ट्रा है, एक तो डैमेज नहीं देगा, पानी जो होगा सीधा डैम की तरफ जाएगा, और वो जो बिल्डिंग्स और उनके जो रास्ते हैं मतलब उनको तोड़ते हुए नहीं जाएगा, बल्कि अगर इनके एक स्ट्रीम बना दी जाए कि यहाँ से जो पानी कलेक्ट हो के सीधा डैम्स की तरफ जाए, तो वहाँ पे एक तो ये पानी ये जो आगे जाके तोड़ फोड़ के बाद ज़ाया होता है वो नहीं होगा, स्टोर हो जाएगा। आगे जाके एग्रीकल्चर जो है उसके लिए फैसिलिटीज़ के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डैम से आप बना सकते हैं, मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगी। तो आप इंडिया और पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है जिसमें वसाइल की आप बात कर रहा हूँ। मैं वसाइल की बात कर रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं। पहाड़ हैं, वहाँ पे आप बनाएं डैम, बिजली बनाएं, वहाँ से आबपाशी का सिस्टम सबसे अच्छा इन्हीं के पास है। इंडिया पाकिस्तान इसी रीजन के पास सबसे अच्छा निज़ाम इन्हीं के पास है। कमी क्या है? पानी की स्टोरेज की। इंडिया डैम बना रहा है, बहुत बना रहा है, पाकिस्तान अभी भी पीछे है। लेकिन देखें कि कुदरती आफात पे हमें सबक कभी भी नहीं मिला। हम बस उसको कोरोना हो गया, कोरोना में आए लोग बर्तन को उठा के टन किया, घर बैठो बाहर निकलो, ये सारी लॉकडाउन, कभी गवर्नमेंट पे हमने तनकीद शुरू कर दी, कभी आवाम को उठा के इधर उधर फेंक दिया कि आवाम ऐसी है वैसी है। तो दोस्तों बात यह है कि हमें एक तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई होती हैं हमारे लिए गवर्नमेंट बैठी है, तो अगर वो पॉलिसीज़ बना रही है, अलर्ट्स कर रही है, तो उन पे हमें थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। मरी में, अब लास्ट टाइम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मरी में टूरिज़म पे रेड अलर्ट नहीं था एज सच। वहाँ पे उनके मुताबिक सहूलियात भी पूरी हैं, मुकम्मल जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो टूरिस्ट के लिए वहाँ पे जगह थी। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होगी और गाड़ियाँ ही दब गई बर्फ़बारी में और नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। लिहाजा अब ये जो है लोगों को भी थोड़ा सा जो है इन अनयूजुअल जो नेचुरल डिज़ास्टर्स से, कोई आप कह लें बारिशें, बर्फ़बारी, ज़िलज़िले, लैंडस्लाइडिंग, तो इनसे अवेयरनेस भी एक तो होनी चाहिए और इनसे बचने के तरीके आपको पता होना चाहिए। और अगर अलर्ट जारी कर दिया जाए तो हमें बिल्कुल सीरियसली उस चीज़ को लेना चाहिए। हमें टूरिज़म, देखो जान बच गई तो अगले साल टूरिज़म चले जाएंगे ना, टूरिज़म के लिए अगले साल भी तो बाकी है। तो जान बचाओ फिर टूरिज़म कर लो, अपना घर बचाओ, अपने नुकसान बचाओगे तो फिर आगे कुछ कर पाओगे। लिहाजा दोस्तों जहाँ भी नुकसान हो, तकलीफ़ सबको होती है। इंडिया है, इंडिया जैसा भी हमारे साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, इंडिया में अगर ये नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान में भी कल हो सकता है, बल्कि हुए हैं हमारे। तो हमें ये करना चाहिए कि हाँ, उनके लिए दुआ करेंगे हम कि अल्लाह पाक उन पे जो है आसानियाँ करे और उनके लिए अच्छे रास्ते करे ताकि वो अच्छे रहें, अच्छे बने और इंसानियत महफूज रहे। अल्लाह पाक सबको ज़िंदा रखे, सलामत रखे और किसी के अपनों को दूर ना करे। सलामत रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब।